The teaching at Vedantu was amazing. One aspect where Vedantu teaching differed from a normal offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time, and they made learning a very fantastic experience for us. Hello बच्चों, so welcome to yet another class and this time of differential equations. बच्चों, today is my second class of differential equations. In the first class we understood the basics of differential equations. हमने सीखा what is order, what is degree, how can we form a differential equation from a family of curve, what is a family of curve is what we learnt in the previous class. तो आगे बढ़ते हैं आज. Let's move ahead today. Okay. So I'll not ठीक है, you guys probably know me by now, so let us move ahead. And बच्चों, yes, so if you like my classes, if you learn in my class, do give me feedback by pressing on the like button. Like button पे press करके मुझे feedback ज़रूर से दिया करो. And if you believe in my vision of spreading education on YouTube, right, to everybody in the country, चाहे वो पैसा पे कर सकता है कहीं क्लास में जाने के लिए कि नहीं, so do share Vedantu classes as well with your friends and do subscribe by pressing on the bell icon so that you keep getting the notifications if you are a new student here. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन. This we have discussed कि कितना weightage है of indefinite definite area under the curve and differential equations. Every year almost one question from each of these come. Okay, giving you a total weightage of 13% almost in your JEE paper. So this is a very scoring portion. I always say integration is one of the easiest and most scoring. अगर आप इसको ढंग से समझ लो तो मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा in JEE. Okay, चलो. So these are the kind of problems we'll learn to solve today. So this is one of the problems that you will learn to solve today. As I said, differential equation is something, if you look at the world around us, ये जो अपने आसपास की पूरी दुनिया है ना, अगर आप उसको mathematically समझना चाहते हो, if you want to understand it mathematically, that you learn as you go ahead in engineering and further studies, you'll realize differential equation is the essence. Differential equation ही सब कुछ है. Differential equation से आप अपने आसपास की दुनिया को समझ सकते हो. If you want to understand the world around us, differential equation is one of the very important tools. Okay, this is the second kind of problem that we'll learn to solve today, right? And this is the third problem which have come in the competitive exams that we will learn to solve today. So we are going to learn to solve problems of which type? अभी बताता हूँ. करना क्या है? We are going to learn to solve differential equation today. In the previous class, what we did? In the previous class, we started with a equation और वहाँ से हमने form किया differential equation. Today we are going just the opposite way. Today we will start with a differential equation and we will solve it to get family of curve. Okay, more on that as we go ahead. We will also talk about general and the particular solution today. तो एग्जाम्पल देता हूँ. मान लो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, एंड इफ इट सोल्यूशन कम्स आउट टू बी लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. वी कॉल इट अ जनरल सोल्यूशन. वाई? बिकॉज देयर इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताया था? दैट एनी equation in which there is an arbitrary constant represents family of curve. Actually, what does it represent? It represents family of curve. ये किस curve का family है? This is, it represents all the circles whose center is at origin. It's a family of circle. So इसको हम बोलते हैं general solution. We call it a general solution. But अगर मैं आपको a की कोई value दे दूं, if I say that a is equal to 2, तो आपके पास कर्व क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन हैज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट. अगर आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कोई स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाए, इफ यू गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट,
इन गोइंग अहेड इन अवर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी विल कॉल इट पर्टिकुलर सोल्यूशन। समझ में आया? ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं अपन। कोई मुझसे पूछ रहा है सर विच बीटेक डिग्री यू हैव? आई हैव बेटा बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी रुड़की। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच इज रिवीजन ऑफ द प्रीवियस क्लास। बच्चों ये लास्ट क्लास में किया था, मैंने आपको जेई की प्रॉब्लम भी बताई थी। द फर्स्ट क्वेश्चन वी डिड ऑलमोस्ट सेम टाइप। क्वेश्चन क्या है? इट इज रिवीजन ऑफ द प्रीवियस क्लास। यहां पे आपको एक इक्वेशन दी है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन which you will get through this equation? What did I teach you in the previous class? You have to identify number of independent arbitrary constants. Independent arbitrary constants. ठीक है? कैसे? What did I teach you in the previous class? बच्चों ये तो हमने किया था क्विक रिवीजन, जस्ट 2 minutes रिवीजन, ओके, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। हमने रियलाइज किया कि एक्चुअली C1 plus C2 is just one constant. What is the whole point of C1 plus C2? I can write this as y is equal to say k times cos x plus C3, right? And इसको ध्यान से देखें अगर अपन, what is this written? This is written e raised to power x into e raised to power C5. E raised to power x plus C5 is e raised to power x into e raised to power C5, and there is a C4 outside. So there is a C4 outside. I can combine C4 and this. ये भी constant है, ये भी constant है. So can I call it for example minus times, अगर ये K1 बोल देता हूँ इसको K2 बोल देता हूँ, right? So what we realize that there are actually 3 constants, not 5 as you saw in the original equation. Actually independent constants are 1, 2 and 3, right? So there are 3 independent arbitrary constants. So the corresponding differential equation will be of order बच्चों क्या होता है order? What is the order? Order is equal to the number of independent arbitrary constants. It will be of the order 3, which many of you told me in the question. Yes, Shantanu Kulkarni, it is live beta. ठीक है? Now you need to tell me the number of independent arbitrary constants here. Now look at the second question. मुझे बताओ number of independent arbitrary constants कितने हैं? How many independent arbitrary constants are there? ठीक है? Kevin says 2, only Fat says 1, Shantanu says 2, Prantik, Akhil, Pritam, Pranav, चिन्मय, ऑल ऑफ यू सेड 2. ध्यान से देखो बेटा, आप कहीं पे कुछ मिस कर रहे हो क्या? लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली. C1 plus C2, all of you understand. I can write this as say K1 e raised to power x plus, now look at this very carefully, there is a C3, there is e raised to power x, मैं इसको लिख सकता हूँ C3 e raised to power C4 into e raised to power x, लिख सकता हूँ. ध्यान से देखो, I can take out e raised per x constant outside. Can I take e raised per x constant outside? E raised per x, what is getting multiplied with it? K1 plus C3 into e raised per C4 is a constant, C3 into e raised to power C4. If you see very very carefully, this entire thing is a constant. This entire thing is a constant, right? Can I directly say this is some constant? से बोल देता हूँ lambda e raised per x. If you see carefully, what is written here is nothing but lambda times e raised per x, right? So how many arbitrary constants are there? 1. There is only one arbitrary constant, bachcho, not 2. Pranav and all those students, Pritam, got it? Everybody got it, right? So bachcho, this is an equation, it is a family of curve. If you create its corresponding differential equation like we learnt in the previous class, uska order bachcho kitna aega? Its order is going to be 1. It will be a one order differential equation. Got it? Clear?
चलो, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट बच्चों, यू कैन मार्क इट एज गुड फॉर रिवीजन. बस इन दोनों को रिवाइज कर लेना. व्हेन यू आर रिवाइजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, जस्ट रिवाइज दीज टू क्वेश्चंस एंड आपका ऑर्डर एंड डिग्री वाले कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, राइट? चलो, सो आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू. सो पहले वाले का ऑर्डर 3 एंड सेकेंड क्वेश्चन हैज ऑर्डर 1, राइट? जस्ट व्हाट वी डिड. सो ऑर्डर 1. Cool. चलो, let us move ahead. Now बच्चों, now this is what we are going to learn. This is the starting of the new class today. So previously we learned equation is given, differential equation is what you created. Ulta now, differential equation is given and you are creating a family of curve out of it. That is solving the differential equation. Solving the differential equation. You can solve differential equation in these ways. Today's class we are going to learn the most simplest and the most important. This is simple and very very important for JEE, right? The variable separable form. We are going to focus on the differential equations where variable can be separated. मतलब क्या है इसका? We are going to learn today. Okay? So who is asking what is differential equation? Exotic beta, please revise my previous class. ठीक है? Differential equation is not differentiation. Okay? Don't confuse. Sagar Tirth, beta, it should get cleared after the classes. Okay? Yes, Pranav, last question में एक ही constant था, hence the order was 1. Yes, Pranav. Okay? चलो. Now, variable separable के ऊपर आ जाते हैं. Variable separable is very simple. What it says, if you can write a function of x with dx and if you can write a function of y with dy, अगर dy के साथ में एक y का फंक्शन लेके आ जाओ और dx के साथ में अगर आप एक x का फंक्शन क्रिएट कर पाओ, राइट, देन क्या होगा? इट बिकम्स वेरी सिंपल टू इंटीग्रेट. इट बिकम्स वेरी सिंपल टू इंटीग्रेट. जैसे ही आप इंटीग्रेट करते हो, यू विल गेट द सोल्यूशन, दैट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग फैमिली ऑफ कर्व, राइट? सो इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सच दैट dx के साथ में x का फंक्शन आ जाए एंड विथ dy द फंक्शन ऑफ y कैन बी सेपरेटेड आउट, then the problem becomes very simple. It is just a problem of integration after that. Okay? ठीक है? तो चलो अब इसको अपन करके देखते हैं. Let us learn to solve the problems like these. As I said, if variables get separated, then you can directly integrate and the constant of integration will come. Actually ये पूरा chapter indefinite integration का chapter है. Actually this chapter is of indefinite integration, nothing else. Okay? सागर तीर्थ, आई एम गुड बेटा, थैंक यू फॉर आस्किंग. हाँ, आ जाओ. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो ध्यान से, वन ऑफ द सिंपल प्रॉब्लम्स बट टू नहीं शांतनु, देयर इज नो सेंस ऑफ ग्राफ हियर. इन डिफरेंशियल इक्वेशंस यू डोंट हैव टू थिंक ग्राफिकली, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दैट. दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का चैप्टर. कूल? क्लियर? हितेश से सर मेरा 11th का बैकलॉग है, कब करें? बेटा अभी 12th पे फोकस करो. ट्राई टू फिनिश ऑफ योर 12th का सिलेबस बाय अक्टूबर. उसके बाद 11th मैं ही करा दूंगा रिवाइज. डोंट वरी, आई विल गेट योर 11th रिवाइज्ड. डोंट वरी. यस डगलस, मैनी ऑफ देम. चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, विल लर्न. अब देखो ध्यान से, व्हेन यू गेट दिस प्रॉब्लम यू रियलाइज, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, when you get a differential equation का question in your exam, your first line of attack should be, यार वेरिएबल सेपरेट हो सकता है क्या? Always ask the first question, can variable be separated? Because 90% केसेस में you'll realize, अरे सेपरेट हो सकता है. So इसमें ध्यान से देखते हैं. आपको क्या चाहिए? आपको dx के साथ में चाहिए x और आपको dy के साथ में चाहिए a function of y. Pretty simple. You can write this as x y square plus 1 dx is equal to minus y x square plus 1 dy. बस all you need to do is cross multiply. मुझे चाहिए dx के साथ में x with dy, I want the function of y. तो ठीक है, इस x को I'll keep here. This x I will bring in the denominator, x square plus 1. With it is a dx. Keep it here. Now
Now keep this minus y on that side and bring this y square plus 1 in the denominator, and dy was always here. Now what you suddenly realize, function of x with dx, function of y with dy, अरे लाइफ तो बहुत आसान हो गई. दिस इज वेरी गुड. नाउ यू कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट. आपको क्या करना है बच्चों? यू हैव टू solve the differential equation. This was the differential equation. What is the meaning of solving differential equation? ये dx और dy को हटाना है. आपको चाहिए a equation only in the terms of x and y. There should be no dx dy. मतलब you have to integrate. You have to integrate, right? तो आपको क्या करना है? Now you can directly integrate because the variables have been separated. Don't forget constant of integration. Don't forget constant of integration. Can you go ahead and solve it? Pretty simple. X square plus 1 का differentiation is written in the numerator. You'll put this as t. ठीक है, multiply divide by 2 कर लोगे. इसके आगे ln क्या हो जाएगा? ये ln x square plus 1 आ जाएगा, ln y square plus 1 आ जाएगा. Now let us see the calculation ahead, but I hope it's clear till here. Now let's look at the calculation. Calculations are very important बच्चों. There is a step which is very important. ध्यान से देखना. ये आ गया टिल हियर. इजी टू इंटीग्रेट, नो प्रॉब्लम. इंटीग्रेट किया अपन ने, क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन इज मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2. इट्स डिफरेंशिएशन इज रिटन एट द टॉप. तो ये हो जाएगा dt अपॉन ln, सॉरी dt अपॉन t. देयर इज अ हाफ आउटसाइड, तो हाफ ln t हाफ ln दिस. इसका कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस हाफ ln दिस प्लस c. नाउ what we do here is this. ये आ गया. Now we don't leave it like this. We don't leave it like this. मैं इन दोनों ln को combine कर सकता हूँ. I can combine the two ln. All of you know ln a plus ln b is equal to ln a into b. Agree? I know this. So मैं क्या करता हूँ इसको? What I do here is I'll take 2 on the other side. That will become 2 times c. उसको छोड़ दो. ये हो जाएगा ln of x square plus 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय y square plus 1 is equal to 2c. Agree? Any doubt? Any doubt? But what is very interesting here is I can actually remove ln because ये 2c तो कांस्टेंट है ना. मैं 2c को ln के फॉर्म में लिख दूं, ln के फॉर्म में लिख दूं. ये कांस्टेंट है. दिस कांस्टेंट कैन आल्सो बी रिटन एज, कुछ तो होगा ना ln के. कांस्टेंट ही तो है, तो ln of k is also constant. So whatever value this constant takes, ln k can also take that value. Agree? Does that make sense? तो आपके पास क्या हो गया? ln this is equal to ln k. ln can be removed, the log can be removed. So what you are left with is this. Something like this. Agree? So Sagar Tirth is asking why it is indefinite, not definite. Because beta, there are no limits of the integration that you can use here. It's a general integration. There are no limits of the integration. Got it? ठीक है, तो समझ में आया? तो ये कैलकुलेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई विल अगेन शो यू द कैलकुलेशन. क्या किया अपन ने? मैं हाफ का 2 took to the other side, became 2c. I wrote 2c as ln of some other constant. So basically rather than writing it as 2c, I wrote it as ln c1. भाई ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. आई एम जस्ट चेंजिंग द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट माय क्वेश्चन का, माय आंसर का फॉर्मेट विल चेंज, राइट? सो क्या किया? नेक्स्ट स्टेप. Why do I do it? Because it's preferable when all other terms are in similar fashion. ये भी ln में, ये भी ln में. अगर ये भी ln में होता तो अच्छा लगता. It would have looked better. Simple. ठीक है. So ये कितना हो गया? ln a plus ln b is ln ab is equal to ln c1. ln can be removed. What you are left with is this. So this is your answer. So this is the solution of the differential equation. The question was a differential equation. This is the solution of the differential equation. And what type of solution it is? General solution. Because there is an arbitrary constant. Whenever there is an arbitrary constant in the equation, it is a general solution.
अभी जब क्वेश्चंस करेंगे वी विल लर्न विथ सम कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन जनरल सोल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड टू अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, अभी करेंगे अपन, ठीक है। अनामिका बेटा एक एक करके आगे बढ़ते हैं। यू विल लर्न टू सॉल्व द जेईई एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स एज वेल इन नेक्स्ट कपल ऑफ क्लासेस, डोंट वरी, ठीक है। इसको देखो, नाउ लुक एट दिस, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस करते हैं बच्चों। डोंट वरी, डोंट गेट इम्पेशेंट, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू वन थिंग, इन दिस चैप्टर at least solve R.D. Sharma's subjective के solved examples of all the varieties to get strong hold of the basic level problem solving and calculations. All of you, please, with my classes, solve R.D. Sharma's subjective के solved examples at least before we move on to higher order problem solving, okay? At least your fundamentals and basic level problem solving will be very, very strong. ठीक है, उसके बाद जाना ऑन अरिहंत और संगेज और एनी अदर बुक, ठीक। आगे बढ़े, चलो। कैन यू डू अ वेरिएबल सेपरेशन हियर, बिकॉज दैट इज माय फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक। तो मैं सोच रहा हूं यार कुछ करके x और y को सेपरेट कर ले, क्या हो जाएगा उसमें, क्या है, वेरी इजी। आई कैन राइट दिस एज dy by dx, आपने कर लिया होगा, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव डन इट। इज आई कैन राइट दिस एज e raised to power x upon e raised to power y, x minus y plus x square upon e raised to power y, e raised power minus y is 1 upon e raised to power y, ठीक है। I can take this e raised power y LCM, take on the other side, it becomes e raised to power y dy, taking dx on the other side, e raised to power x plus x square dx। अरे वाह, वेरिएबल सेपरेटेड, dy के साथ फंक्शन ऑफ y, dx के साथ फंक्शन ऑफ x। प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, ऑल यू नीड टू डू इज इंटीग्रेट। जैसे ही हो जाएगा, इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स, एड अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बस यू विल गेट द आंसर। ये कितना हो जाएगा बच्चों, e raised to power y is equal to e raised to power x plus x cube by 3 plus c। ये रहा a, right? So this should be your answer. This is your answer. This is the differential equation. This is the solution, which is a family of curve. नहीं बेटा, सागर तीर्थ, इसका significance, सागर तीर्थ is asking what is the graphical significance of it. So basically, let me explain you what is the graphical significance. Every differential equation actually represents a family of curve. It represents a family of curve, and every family of curve is a family of graphs, ठीक है। So every differential equation represents a family of curves, that is a graphical significance, ठीक है। जैसे सर्कल के केस में family of circle क्या था, all the circles with center at origin, that is the graphical significance, correct। आगे बढ़े। Pritam is asking, sir, why do we try to remove every arbitrary constant differential equation? Beta, it was in the previous class when we created a differential equation, क्योंकि differential equation by definition does not have any constant, agree? इसलिए हमने arbitrary constants को remove किया था प्रीतम। हाँ, अब आ जाओ, तो ये हो गया, इसका आंसर तो ये हो गया, ये आ जाओ। दिस इज IIT 2004, करो इसको, डू इट ऑल ऑफ यू। वैभव बेटा देखो एक बार, अगेन ट्राई टू फोकस हियर, यू विल गेट इट, डोंट वरी। सर लिसन टू मी प्लीज, शो द ग्राफ ऑफ e की पावर x। अरे ऋषभ बेटा, मेरे गो अटेंड माय प्रीवियस क्लासेस। e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है? This is the graph of e की power x, right? Always above x-axis, always increasing 1 to 1, right? We have done this in the chapter of functions in lot of depth. Now look at this बच्चों, Vaibhav, focus here. Don't worry, Neuron Day, you can go and attend my previous classes as well. In YouTube, in Vedantu JEE channel, you will find all my classes. ठीक है, सो वॉट एवर चैप्टर्स आर वीक यू कैन गो एंड अटेंड माई प्रीवियस क्लासेस, डोंट वरी, ठीक है न्यूरॉन। हाँ आ जाओ। सो वेरिएबल सेपरेट, यस और नो, कैन यू सेपरेट द वेरिएबल? लुक एट दिस,
I will explain you the meaning of this. This is going to help you in converting the general solution into a particular solution. We'll come to that. सबसे पहले क्या करेंगे? We'll solve it. We'll first check if variable can be separated. So yes, variable can be separated. Very simple. क्या हो जाएगा? 2, I'm taking dx on that side, dy here. तो ये हो गया dy upon 1 plus y. Taking dx on the other side and 2 plus sin x also on the other side, it will look like minus cos x upon 2 plus sin x dx. Variable separated, dy के साथ y का function, with dx there is a function of x, so I can very well integrate it. There will be a constant of integration. You can solve it. बच्चों क्या हो जाएगा? This will be ln 1 plus y. ln 1 plus y. ठीक है? This is, you will put 2 plus sin x is equal to t. ऊपर लिखा हुआ है dt. ठीक है? There is a minus sign, so it will become minus ln 2 plus sin x plus c. Again the same approach of solution. What will I do? I'll take this ln on this side. I'll take this ln on this side. ठीक है? तो ये बन जाएगा आपका ln of a plus ln of b. तो बन जाएगा ln of 1 plus y into 2 plus sin x. And rather than writing c, you will want to write it as ln of some constant, right? So rather than writing as c, you will want to write this as ln of k, for example, right? So you can write this as ln of k. Now ln can be removed. Now the ln can be removed. So what will be your solution? 1 plus y into 2 plus sin x is equal to a constant. That will be your general solution. So let's come to that. I hope it's clear to all of you. ठीक है? तो क्या आ गया आपके पास? कहाँ तक पहुँच गए अपन? कहाँ गया? ये रहा. So this is where we have got. So this is what we have got. क्या गया था अपना solution? Again, the step where we left in the previous page, अपने पास आ गया y plus 1 into 2 plus sin x is equal to a constant, whatever name you want to give it. Let me give it a name, say c. This is a general solution. What solution is this, bachcho? General, because there is an arbitrary constant. But what is given here is y of 0 is 1. What is y of 0? What is the meaning of y of 0? It means when x is equal to 0, y is equal to 1. This is the meaning. Y of 0 या फिर function of 0 is 1. मतलब when the x is 0, the y की value is 1. Is that clear? Any doubt in this language, बच्चों? Any doubt in this? No, na? So this will help me in getting a particular solution. मतलब when x is 0, y is 1. That will give you the value of the constant c. So this general solution is going towards the particular solution. Right? Clear? So क्या हो जाएगा बच्चों ये? So put कर देते हैं x को 0. तो ये कितना हो जाएगा y बच्चों कितना हो गया 1. So y तो हो गया 1. So 1 plus 1 2 plus 0 is equal to c. तो कितना हो गया? c कितना आ गया बच्चों? c आ गया 4. c came out to be the 4. Agree? So it means, what is your particular solution? What is your particular solution? Your particular solution is, this implies the solution is y plus 1 into 2 plus sin x is equal to कितना है बच्चों? 4. So why could you find a particular solution? Because a condition was given to you. If there is a condition given in the question that helps you find a particular solution by finding the value of constant, तो ये तो बच्चों क्या आ गया आपके पास? The particular solution. But what is the question? Question is y of pi by 2. What is y of pi by 2? The value of y when x is pi by 2. It means, what do you want? It means, what is y when x is pi by 2?
right? So what will you do? Put x is equal to pi by 2 here. The value of y is your answer. Put x is equal to pi by 2. The value of y is your y of pi by 2. Yeah, value of y when x is equal to pi by 2. Got it? Supan, because it is given in the question, na beta, because y of 0 is 1. So when x is 0, y is 1. It is given to you. Sagar Tirth, did you understand this? इसका मतलब क्या है? Y of 0 equal to 1 means when x is 0, then y is equal to 1. ठीक है? Nikhil, beta, you should revise my indefinite की classes to get hang of the indefinite integration. ठीक है? बस वैल्यू फाइंड कर लेना. क्या करोगे? Put x is equal to pi by 2. Find out the value of y. क्या आ रहा है बच्चों आंसर? What is the answer coming out to be? Y will come out to be 1 by 3. Put x is equal to pi by 2. Sin pi by 2 कितना हो जाएगा? 1. 2 plus 1 3. ये कितना हो जाएगा? 4 upon 3. Y plus 1 is 4 by 3. Y will be equal to 1 by 3. Cool? I hope you got it. Yes or no? समझ में आ गया सबको? Is that clear, all of you? राजस शिरोडे, एक बार रिवाइज करो बेटा. नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन. अरे नहीं रे एडम लिवाइन, नहीं करना इतना. ट्रिग्नोमेट्री में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है. ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन ऑल अदर चैप्टर्स. अपने आप प्रैक्टिस होता रहता है. ठीक है? सो ट्रिग्नोमेट्री में डू योर बेसिक बुक, उसके बाद जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो. ट्रिग्नोमेट्री विल कीप रिवाइजिंग इन ऑल द चैप्टर्स एनीवेज. ठीक, आ जाओ इसके ऊपर. स्टडी शुड बी डन इन सच अ वे दैट यू गेट इनफ टाइम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. टिपिकली स्टूडेंट्स डू अ मिस्टेक. वो मैथमेटिक्स की बुक्स करते रहते हैं. दे कीप सॉल्विंग अरिहंत, फिर सेंगेज, कोचिंग मटेरियल. अरे बाबा, टेक वन बुक एंड डू इट. इफ टाइम इज लेस, just do the alternate problems of any book. For example, if you're doing Arihant or Cengage, it is very thick. What I used to do, I just used to solve the alternate problems, odd numbered problems. ठीक है ना? Because I have to do chemistry as well, because I have to do physics as well, right? ठीक है? Cool. ये देखो क्या मतलब है इसका. Let me explain you the question का meaning. This is given to you. dy by dx is equal to y plus 3. Y of 0 is equal to 2. It means when? It means what? When x is equal to 0, y is equal to 2. This is given to you. What is the question? It means what is the value of y when x is equal to log 2? This is the question. Y of log 2, मतलब the value of y when x is equal to log 2 is the question. राइट, दैट इज द क्वेश्चन. सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे? यू विल सॉल्व इट. वेरी सिंपल. dy अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू dx. वेरिएबल सेपरेटेड, नो प्रॉब्लम. इंटीग्रल c कितना हो जाएगा? ln ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस c हो जाएगा. ln ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस c. राइट, इट इज गिवन टू यू that y x equal to 0 पे y 2 है. right? So this implies put x is equal to 0. तो कितना हो जाएगा? x तो 0 हो गया, y कितना हो गया? 2. so c कितना हो गया? ln 5. it implies c is equal to ln 5. ln and log are same. when nothing is given, base is always e. log in the questions, base is always e. okay? रंजना, स्ट्रेटजी फॉर बोर्ड्स. अरे एनसीईआरटी कर लो यार. कुछ नहीं है बोर्ड के लिए. टू बिफोर द बोर्ड एग्जाम, जस्ट पिकअप एनी सैम्पल बुक ऑफ प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, उसको कर जाना एक बार, बहुत है. एनीवेज, तो ये आ गया c इक्वल टू ln 5. सो मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? दिस इंप्लाइज दैट द सोल्यूशन एक्चुअली कितना हो गया? द डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स ln y प्लस 3 is equal to x plus ln 5. x plus ln 5. एग्री? ये हो जाएगा. नाउ आपको क्या करना है? पुट x is equal to ln 2 and find out the value of y.
तो करें कैलकुलेशन. कैन यू सी द, आई विल शो यू द कैलकुलेशन क्विकली. कहाँ तक पहुँच गए थे अपन? हम पहुँच गए थे यहाँ तक. दिस इज वेयर वी हैड रीच्ड. वी हैड रीच्ड दैट c की वैल्यू केम आउट टू बी log 5. So log y plus 3 is equal to this. This is my specific solution of differential equation. This is where we have reached. Can I also write it like this? क्या किया हमने? ln of y plus 3 came out to be x plus ln 5. ठीक है? Converting this in the form of exponential, y plus 3 is equal to e raised to power this entire thing, e raised to power x plus ln 5. Agree? Agree? क्या किया? ये किया मैंने. ln a is equal to b. It implies e raised to power a is equal to e raised to power b, right? All of you know the same thing here. So y plus 3 is e raised to power x plus ln 5. I can further write this as e raised to power x multiplied by e raised to power ln 5. What is this बच्चों? What is this? E raised to power ln 5. Did I not tell you a raised to power what? E raised to power, ऐसे लिख देता हूँ, सिंपल लगेगा. e raised to power ln a. Always remember, या और सिंपल लिख देता हूँ. This is always a. Did I tell you in many other classes so many times? This simply becomes 5. It becomes 5 e raised to power x. ये आ गया 5 e raised to power x. So y plus 3 becomes 5 e raised to power x. This is your specific solution. So these calculations should be very very clear in your head. समझ में आ रहा है सबको? बस उसके बाद क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या था बच्चों? Find out the value of y. Question was what is the value of y when x is equal to log 2? This was the question, right? बस तो अपने पास क्या हो गया? This is my equation. y is equal to 5 e raised power x minus 3. Then y of log 2 या value of y when x is equal to log 2 कितना हो जाएगा? In the place of x put log 2. So 5 e raised to power log 2 minus 3, but as I told you, e raised to power log 2 to the base e is nothing but 2. So this entire thing becomes 2. 5 into 2 10, 10 minus 3 7. So value of y when x is ln 2 is 7. Yes or no? Ritul Kumar, go and attend my inverse trigonometry classes. We have done that in very very depth. जो आप पूछ रहे हो indefinite integration का. Clear? बच्चों, yes or no? Did you understand it? Yes or no? I want yes or no. Are these calculations? Did you understand the calculations? है प्रणव उंद्रे सर, y is also minus 13. ये कहाँ से आ गया भाई? निखिल, लॉग वाला कंसेप्ट नहीं आया बेटा. ये चीज़ याद रख लो. मैंने इन द चैप्टर ऑफ लिमिट्स, इन द चैप्टर ऑफ कंटिन्यूटी ऑल्सो आई रिपीटेड इट मैनी टाइम्स. फिलहाल क्या याद रख लो? जस्ट रिमेंबर दिस, e raised to power ln a is always a. Just keep this in mind, note it down. You can take log on both the sides, you can easily see, big deal. ठीक है? कोई पूछ रहा है अरिहन सॉल्व नहीं होती, तो क्यों करना है अरिहन सॉल्व? क्यों करना है? पहले बेसिक्स करो. अगर सॉल्व नहीं होती तो फर्स्ट डू बेसिक्स, फर्स्ट डू योर आर डी शर्मा सब्जेक्टिव सॉल्व एग्जाम्पल्स, देन डू इफ यू आर गोइंग टू सम कोचिंग और लर्निंग एट वेदांतु, डू द फर्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद में जाना ऑन एनी अदर बुक. ठीक है? इधर आ जाओ. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, JEE 2014. दिस इज अ क्लासिकल क्वेश्चन which represents how population grows. This is the differential equation which represents the growth of population. Come on this. सर मॉड से आता है प्रणव? अरे भाई कितना कुछ आता है मॉड से बेटा.
मॉड के ऊपर आई डिवोटेड एंटायर 1 क्लास ऑन मॉडुलस फंक्शन इन द चैप्टर ऑफ फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, Sagar Tirth, they do come. Statement questions, word problems come. Look at this. क्या बोल रहा है? Let us try to understand the problem. करें? समझे क्वेश्चन को? Answer is C, but let's read the question. It says, let the population of rabbits surviving at any given time. This is your chemistry also. Chemical kinetics. In chemical kinetics, you get differential equation. Let the population of rabbits surviving at any given time t be governed by the differential equation this. So at any given time t, the population of rabbits is given by this differential equation. ठीक है, कैसे we will learn. ठीक है, and there is a condition given that p of 0 is 100. Then pt equals, if you remove the word statement, it is simply solve the differential equation. Question is very simple. Solve the differential equation. ठीक है, solve the differential equation and use this condition to find out the particular value. Okay, clear? तो आ जाओ करते हैं. बहुत सिंपल है. The variable separable, there is d of pt and there is pt, same variable. You can think of it as y. dy by dt is equal to half y minus 200, right? So variable can be separated. d of p upon half p minus 200 is equal to dt. The variable got separated. You can easily integrate. Very simple. This is JEE 2014 problem. Pretty simple. Integrate हो जाएगा. Can you integrate this बच्चों? क्या करोगे? Put this thing as t, for example. तो ये कितना हो जाएगा? ln of t और एक 2 का फैक्टर आ जाएगा, राइट? दिस विल बी t प्लस c. एग्री? एनी डाउट इन दिस? कैन यू सॉल्व इट? क्या किया मैंने? इस पूरे को ले लो, पुट दिस थिंग इज इक्वल टू से y, राइट? से दिस इज y. तो कितना हो जाएगा मेरे पास? सो y इज इक्वल टू हाफ pt. सो dy कितना हो जाएगा? dy इज इक्वल टू हाफ d pt. एग्री? तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? इंटीग्रल ऑफ dpt विल बी 2 times dy, 2 times dy, डिनोमिनेटर इज y, राइट? सो दिस विल बिकम 2 times ln of y, which is this 2 times ln of half pt minus 200, राइट? सो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 2 times ln half pt minus 200. Its integration is t plus c, right? So let's go to the integration now. So what is the integration? Let's see. We are integrating it here. क्या हो गया? This is what it became. Now let's look at the calculations very carefully. So ये आ गया integration. 2 times log this is equal to t plus c1. मैं क्या करता हूँ? Let me take 2 on the other side. Let me solve it for you. It is log of pt by 2 minus 200 is equal to t by 2 plus c1 by 2. Agree? Now I am taking e की power that side. तो कितना हो जाएगा? Removing this ln from here, this entire thing will come in the power of e. This entire thing will come in the power of e, which is e raised to power t by 2 multiplied by e raised to power c1 by 2. Agree? But c1 by 2 is a constant itself. E की power c1 by 2 is a constant itself. I can directly write this as k times e raised to power t by 2. Agree? Right? तो ये कितना बन जाएगा? ये बन गया. क्या बन गया ये? pt by 2 minus 200 is equal to constant times e raised to power t by 2. constant times e raised to power t by 2. मैंने constant का नाम क्या रखा है? यहाँ पे c लिखा हुआ है. It's the same thing, right? Clear है? Now what was given in the question? It was given that p of 0. So when t is equal to 0, ठीक है,
some value was given to you, agree? कहाँ था? What was given? P of 0 is 100, मतलब when you put t is equal to 0, in this when you put t is equal to 0, you should get the value of p as 100. बस put कर दो, just put it. क्या किया अपन ने? The value of p is equal to 100 when t is equal to 0, right? So मैंने क्या किया? Put t is equal to 0, e raised to power 0, that is 1. So c, e raised to power 0 is 1. So c is equal to p of 0 by 2 minus 200. P of 0 is 100 given in the question. So c बेटा कितना आ गया? c बच्चों आ गया minus 150, right? So this equation got a particular solution, which is, this is the particular solution. This is the particular solution where the value of c now is minus 150. That's it. Now what is the question? बस ये आ गया p of t. So the population of rabbits at any given time is given by the equation 400 minus 300 e raised to power t by 2. So the population increases exponentially, right? Do you remember such things in chemical kinetics? I think chemistry में chemical kinetics में आता ही है, right? Yes, this is NCERT question as well, right? And this is JEE problem as well. Clear? All of you understood this? Yes or no? Any doubt in this, बच्चों? So don't get afraid by the word statement. Simply try to understand. क्या होगा? It will be a differential equation given to you. There will be a condition given to you. Solve the differential equation. Use the condition to find out the value of C to get the particular solution. Nuclear reaction. Preeta Mondal, you are right. Whenever something increases exponentially, right? So at any given time, the value can be found out through a differential equation. That is what you learned in chemical kinetics also, right? Now equations reducible to variable separable. Very simple. I'll take one example to explain this. बच्चों, whenever you see a format of this type, what we are learning, फिर से देखो, there are certain equations which can get reduced to variable separable format. कैसी होती हैं वो equations? ठीक है, बीटा डीके प्रोसेस. यस निखिल, यू आर राइट. हाँ, इसके ऊपर आ जाओ. सो इफ dy by dx can be written as a function of ax plus by equal to c, or a linear function in x and y. ठीक है, सौरभ बेटा एक बार प्लीज रिवाइज करो, एक बार रिप्लेस है. आई एम श्योर यू विल गेट इट, डोंट वरी. यस, देखो यशोवर्धन एंड मेनी स्टूडेंट्स wrote बिल्कुल ब्यूटिफुली. न्यूक्लियर रिएक्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, many of these actually are differential equations. अरे रुक जाओ सुपन बेटा, there is a telegram group. If you have specific questions you can post in the telegram group. Okay, ठीक है. हाँ, तो अब क्या करेंगे? Questions of this format where dy by dx is a function of a linear expression in x and y, ठीक है, can be solved by putting ax plus by plus c is equal to t. उसको t पुट कर देंगे, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड्स, इट विल बिकम a b dy by dx, c का डिफ्रेंशिएशन 0 dt by dx, राइट. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द टर्म्स ऑफ t. इस पूरे क्वेश्चन को कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ t. ax plus by plus c, तो बच्चों कितना हो जाएगा? दिस विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? सो दिस विल कन्वर्ट इनटू, यूजिंग दीस टू, इट विल लुक लाइक dy by dx विल नाउ बिकम, कितना हो जाएगा बच्चों? dt by dx, ठीक है, माइनस a 1/b हो गया. dy by dx को क्या किया मैंने? dt by dx माइनस a अपॉन b. ये कितना हो गया? f of t. नाउ द वेरिएबल कैन गेट सेपरेटेड. कैसे सेपरेट हो जाएगा वेरिएबल? देखो, ये हो गया dt by dx
राइट, ये कितना हो गया b टाइम्स एफ टी प्लस ए, राइट। नाउ द वेरिएबल कैन बी सेपरेटेड, कितना हो जाएगा डी टी अपॉन b टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस ए इज इक्वल टू डी एक्स। हो गया वेरिएबल सेपरेट, हो गया वेरिएबल सेपरेट, dt के साथ द फंक्शन ऑफ t dx प्लस c। सो दिस इज द ट्रिक। अरे हाँ बेटा समीर बंसल कर लो, कुछ भी कर लो यार, इतना परेशान मत हुआ करो, कोई भी बुक कर लो यार, ऑल बुक्स आर गुड, डोंट वरी। 95% प्रॉब्लम्स इन ऑल द बुक्स आर सेम, सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल करते हैं, लेट्स डू अ लास्ट एग्जाम्पल हियर फॉर टुडे। आई एम अगेन टेलिंग यू बच्चों, आफ्टर टुडेज क्लास पिक अप योर आर डी शर्मा सब्जेक्टिव, एटलीस्ट वेरिएबल सेपरेबल वाला पोर्शन के सॉल्व एग्जाम्पल कर लो। प्लीज डू द सॉल्व एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर आर डी शर्मा सब्जेक्टिव एटलीस्ट if you are doing this chapter for the first time, before you jump to any objective book, please, okay, it will really give you very strong hold of problem solving, trust me on this, ठीक है। Now look at this, do you realize that this entire thing actually is a function of, do you see something repeating here? Do you see 2x plus 3y getting repeated here? हो रहा है, आप इसको लिख सकते हो ऐसे, है ना, ये 2x प्लस 3y का फंक्शन है ना एक तरीके से, बिकॉज 2x प्लस 3y इज रिपीटिंग हियर, 2x प्लस 3y माइनस 1 2 टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस 5, राइट। सो हाउ डू वी सॉल्व इट? वी कैन एक्चुअली कन्वर्ट इट इनटू अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। करें कैसे? लेट मी शो यू द कैलकुलेशन। क्या करेंगे बच्चों? वी रियलाइज that 4x plus 6y is 2 times 2x plus 3y, and in this entire question 2x plus 3y is repeating again and again. So पूरे 2x plus 3y को उठा के पुट कर दो t, put 2x plus 3y is equal to t, it will become very simple. क्या हो जाएगा? When you put 2x plus 3y is equal to t and differentiate with respect to x, 2 plus 3 times dy by dx is equal to dt by dx. क्लियर? अब क्या करो? कन्वर्ट दिस एंटायर क्वेश्चन इन द फंक्शन ऑफ t। कैसे? क्या करोगे बच्चों? आप क्या करोगे? यूजिंग दीज टू योर क्वेश्चन बिकम्स, सबसे पहले तो व्हाट इज dy by dx, व्हाट इज dy by dx, सेपरेटेड आउट, इट विल बिकम dt by dx minus 2 होल अपॉन 3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक माई कैलकुलेशंस। ये कितना हो जाएगा? दिस इज t and this is 2 times t, so it will become t minus 1 2t minus 5. Simplify it, you will realize it will become variable separable. कैसे? 3 को उधर ले जाएंगे, dt by dx minus 2 is equal to 3 times t minus 1 upon 2t minus 5. Then we'll take this 2 on that side plus 2. LCM ले लोगे आप, LCM ले लोगे, you will get this entire thing as a function of t, bring it here, take dx that side and solve. इसको solve कर लो, ये कितना हो जाएगा? 3t minus 1 plus 4t minus 10 upon 2t minus 5. सिंप्लीफाई कर लेना आप, ठीक है? क्लियर? I'll show you the calculations, I'll just show you the calculations. तो कितना हो गया? dt by dx, ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द कैलकुलेशन दैट आई वाज जस्ट डूइंग, अरे प्रणव, सी व्हाट इज रिपीटिंग? सो प्रणव इज आस्किंग इफ आई पुट 2x plus 3y minus 1 equal to 2. नहीं बेटा, सागर तीर्थ एंड प्रणव, व्हाट इज रिपीटिंग बेटा? 2x plus 3y is repeating, 2x plus 3y minus 1 is not repeating. What is repeating? 2x plus 3y, उसको t पुट करो, क्लियर? ठीक है। निखिल इज आस्किंग स्ट्रेटेजी फॉर जेई मेंस एंड एडवांस्ड। बेटा पढ़ाई करो, स्टडी, द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू कीप स्टडिंग विदाउट लूजिंग हार्ट, ठीक है। अरे मेहनत करो, होता जाएगा, लोड मत लो यार, बहुत टेंशन लेते हो तुम लोग, इतना टेंशन लेता ना मैं मर जाता इफ आई वॉज एट योर एज। हाँ तो क्या हो गया? सो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास dt by dx इज इक्वल टू 70 minus 13 अपॉन 2t minus 5. टेक एंटायर t वाला थिंग ऑन अदर साइड, सो dt के साथ टेक
2t minus 5, 70 minus 13. 2t minus 5, 70 minus 13 with dt. Bring dx on the other side, dx on this side, integrate, add plus c. ठीक है ना, इंटीग्रेट करोगे तो प्लस सी आ जाएगा. प्लस सी क्यों नहीं लिखा है भाई मैंने, तो एक प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है ना, एग्री. अब क्या करोगे इसको, दिस डू यू नो हाउ टू सॉल्व, डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस. अरे टी इज जस्ट अ वेरिएबल बेटा, मोनिल परमर, आई हैव जस्ट टुक अ वेरिएबल टी, राइट. इसको कैसे सॉल्व करोगे, सो राम राजू इज आस्किंग इफ द कांस्टेंट इज आल्सो रिपीट व्हाट विल वी डू. कोई बात नहीं, फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी को t ले लेना, कोई टेंशन नहीं है. 2x प्लस 3y प्लस समथिंग भी t हो जाएगा इफ दैट एंटायर थिंग इज रिपीटिंग. सो कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट. हाँ सुमेध, व्हाट इज योर डाउट बेटा. अच्छा, लॉट ऑफ यू आर आस्किंग, देखो लेट मी एक्सप्लेन. लॉट ऑफ यू आर आस्किंग दिस, lot of you are asking can I put 2x plus 3y minus 1 is equal to t. Why I didn't do that, because it's pretty clear that if I put this as t then this also becomes a function of t, right. अगर इस पूरे को मैं t लूँगा ना तो इसको t के फॉर्म में लिखने में दिक्कत हो जाएगी मुझे, it will be difficult, right, because what is repeating, just identify ax plus by plus c. See what is repeating in this. It is very simple to see that 2x plus 3y is repeating here, right. So it's very easy and simple and not confusing to put 2x plus 3y is equal to t, because then this becomes 2t. समझ में आया, this is very important, clear. Now as far as its calculation is concerned बच्चों, its calculation is, आप क्या करोगे, break the numerator, this 2t minus 5 break it as, कर सकते हो क्या, a times 70 minus 13 plus b. You can break it, yes or no. I taught you in the chapter of indefinite integration. 70 minus 13, 2t minus 5. So you can write 2t minus 5 as a times 70 minus 13 plus b. Find out the value of a and find out the value of b by comparing the coefficients, right. तो एक तो आ जाएगा 2/7, a will come out to be 2/7 and b will come out to be minus 11/7. Now it is easy to integrate, तो ये तो कट जाएगा, this will cancel out, and इसका integration all of you know it is ln of 70 minus 13, right. So क्या हो जाएगा, so your calculation will come out to be this, and hence after that once you get this again put t की value is equal to 2x plus 3y and you'll get the answer. Clear, is that clear? Is that clear? Any doubt बच्चों? Yes Nikhil, you are right, we converted the numerator in the form of this. We learnt in the chapter of indefinite integration, linear upon linear. इसको हम क्या करते हैं, we can break it as a times denominator plus a constant, right, to be able to integrate it. Is that clear? Yes or no? Cool. फिर से I'm repeating बच्चों, after today's class ideal is to go and solve the variable separable form के questions from R.D. Sharma's subjective kind of a book. That will really make this portion very strong in your brain. ठीक है, is that clear? चलो okay. Yes Vittal, I saw your email and I replied it today. Okay, चलो आगे बढ़े. On that note I'll end my today's class बच्चों. The PDF and everything will be available on the Telegram link. It is also available on Vedantu app. I suggest you download Vedantu app. उसमें आपको आज तक के सारे PDFs and assignments also मिल जाएंगे, right? And on that note बच्चों, I'll end my class with what? Y equal to x square बच्चों. Have y equal to x square on your faces. Keep smiling. Be happy. Be blessed. And I'll see you in couple of minutes with a surprise announcement with Vani ma'am and Anand sir. Okay, especially for the medical students. On that note, chalo, bye bye. Be happy always. Tension mat lo. All books are good. Don't worry about 11th. Focus on 12th. Do your basic book. Do any one book after that. If the number of questions are very large in that book, just solve the odd number या even number questions.
बी हैप्पी इन लाइफ, सब हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस बिटवीन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। डोंट मिस आउट ऑन केमिस्ट्री, अ बिग मिस्टेक दैट मैनी ऑफ यू डू, दैट इज प्रिटी सिंपल। ठीक, चलो, ओके, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास, बाय।